Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again, and today I have come up with the new lecture series that will be dealing with the irrigation and water management. तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कब आप इरिगेशन के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे. तो उन सभी लोगों के लिए, इवन फॉर ऑल द व्यूवर्स, ये इरिगेशन की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट की जा रही है. एंड लेट मी टेल यू कि इरिगेशन इट्स वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स इन द एग्रोनॉमी ग्रुप एंड इन द जनरल एग्रीकल्चर एज वेल. तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में. सो दिस इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो let us start with the irrigation lecture 1, and this lecture, let me tell you, is full of facts and figures. So in this particular lecture you will be getting information about availability of water on the earth, like what is the annual water budget of India, then gross and irrigated net irrigated area of India and states, total irrigation potential, the ultimate irrigation potential, annual total replenishable groundwater resources of country, then major, medium and minor irrigation projects. So let me tell you, it is full of facts and figures, and these facts and figures are generally and frequently asked in your competitive exams. So let us start without much ado. So first of all, you see the availability of water in the earth. So the total amount of water on the earth is around 1400 million kilometer cube. Always remember this, 1400 million kilometer cube. Then about 97% of the water is in the oceans and not useful for irrigation. तो 97% जो वाटर है टोटल वाटर में से, दैट इज प्रेजेंट इन द ओशन एंड इट इज ऑफ नो यूज लाइक फॉर द इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और इसमें अगर हम टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर में देखें तो सिर्फ 2.5% ही आपका फ्रेश वाटर है. सो ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर. And again, if we look into the fresh water, then out of the total fresh water, 77.23% is in the polar ice caps, icebergs and glaciers. Okay, then moving on. Now this is very important, और इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. एनुअल वाटर बजट ऑफ इंडिया. सो अगर हम एवरेज रेनफॉल की बात करें इंडिया की, सो इट इज़ 1194 millimeters annually. Okay, so the average rainfall of India is 1194 mm and it is around 120 centimeter, you can say. Okay, then the total quantity of rainfall which is received on a geographical area of 328 to 329 million hectare in India is 400 million hectare meter. तो अगर आप टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल जो कि हमारे पूरे टोटल जोग्राफिकल एरिया पे रिसीव हो रही है, और हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है अराउंड 328 टू 329 मिलियन हेक्टेयर, तो हम कितना रिसीव कर रहे हैं? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर्स ऑफ water. So this is the annual water budget of India and it includes the snowfall part as well. Okay, now so it means, अब देखिए कभी कभार मिलियन हेक्टेयर मीटर्स में पूछता है, कभी कभार यूनिट चेंज हो जाती है. तो एनुअल प्रेसिपिटेशन और द एनुअल वाटर बजट ऑफ इंडिया, इट इज 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, और यू कैन से 4000 किलोमीटर्स क्यूब. Okay, and 4000 BCM. Now you need to tell me what do you mean by BCM in the comment section. Okay, so now out of this 400 million hectare meter of rainfall, 75% of it is received during the southwest monsoon period. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि मेजर पोर्शन ऑफ द like annual water budget comes from the southwest monsoon, और कितना है वो? 75%. It means it comes around June to September, and the rest of the like 25%, that is basically come in the 8 months, rest of the 8 months. Okay, now out of this, so 400 million hectare meter of rainfall we have,
and out of this 215 million hectare meter soaks into the soil. Okay, तो infiltration हो जाता है उसका, and 70 million hectare meter is lost as evapotranspiration. तो जो immediate evapotranspiration हो जाता है वो कितने का होता है, 70 million hectare meter, और 215 million hectare meter that soaks into the soil. Okay, now moreover, yes, this is also very important, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये फिगर्स चेंज होते हैं, तो these are the recent updates. Total net irrigated area of India is around 68.38 million hectare. तो अगर आपसे कोई टोटल नेट इरीगेटेड एरिया की बात करता है तो यू विल से 68.38 मिलियन हेक्टेयर. एंड लेट मी टेल यू, इन द होल वर्ल्ड इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इरीगेटेड एरिया. ओके, तो सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया इंडिया के पास ही है. देन अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट्स की इन टर्म्स ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया, एंड दिस इरीगेटेड एरिया इज प्रेजेंट और इज गिवन इन द 1000 हेक्टेयर्स, देन द फर्स्ट रैंक goes to UP, that is Uttar Pradesh. It ranks first and it is having 14,389,000 hectare. Then second rank goes to MP and third rank goes to Rajasthan, and you can check the figures. Okay, and in terms of total gross irrigated area, India has around 96.45 million hectare. 96.45 million hectare. And again, if we talk of the top 3 states in terms of gross irrigated area, यहाँ पर net irrigated area नहीं है, ये gross irrigated area, that is the typing mistake. So again, it is UP first, second MP, and third is Rajasthan. And you can check the data. Okay, that is present in the 1000 hectare. Okay, now one question is also asked, like on the basis of the projection, that India's demand of total water is projected to increase, like 22% and 32% by 2025 and 2050 respectively. तो 2025 तक 2025 तक 22% जो टोटल वाटर डिमांड है वो प्रोजेक्टेड की गई है कि इंक्रीज होगी या हमारी डिमांड उतनी बढ़ेगी. एंड by 2050, 32% of the India's demand of the total water is projected to increase. तो आपको ये याद रखना है कि 2025 तक 22% और 2050 तक 32%, ठीक है, प्रोजेक्शन हुआ है. नाउ मूविंग ऑन. यस, देखिए सारे के सारे जो यहाँ पर आपके हैं, तो like you can see irrigation projects. तो basically we have 3 irrigation projects here, minor, medium and major, और इसमें से आपका क्वेश्चन एक आता ही आता है. So you can see I have divided these irrigation projects into 3 categories on the basis of 2 parameters. So first parameter आपका है cultivable command area. तो अगर हम कल्टिवेबल कमांड एरिया की बात करें, अगर किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट का एरिया इफ इट इज लेस देन 2000 हेक्टेयर और इक्वल टू 2000 हेक्टेयर, इट विल कम अंडर माइनर. And if it ranges from 2000 to 10,000 hectares, then it comes under medium. And if it is more than 10,000 hectares, it will come under the major. Okay. Then in terms of cost, which is presented into million, तो अगर हम 2.5 मिलियन से लेस है तो आपका माइनर में आएगा. इफ इट इज 2.5 to 50 million, it will come under medium, and if it is more than 50 million, it will come under major. Now again, very important question which is frequently asked, that what is the total irrigation potential of India, or we can say what is the ultimate irrigation potential of India. So it is around 140 million hectares. It means 139.9, which is almost equal to 140 million hectare. और इसमें से जो आपका ग्राउंड वाटर इरीगेशन पोटेंशियल है, दैट इज 64 million hectare. एंड if we talk of the ultimate irrigation potential through major, medium and minor project, it is around 75.9 million hectare. So 75.9 plus 64, it comes around 139.9 million hectare. तो आपको ये याद रखना है कि ये तीनों फिगर्स आपको याद रखना है कि टोटल अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल हमारा 140 मिलियन हेक्टेयर है, और ग्राउंड वाटर के थ्रू 64,
और अल्टीमेट जो इरिगेशन पोटेंशियल थ्रू मेजर, मीडियम एंड माइनर प्रोजेक्ट्स है दैट इज अराउंड 75.9 मिलियन हेक्टेयर. ओके, देन मूविंग ऑन, if we talk of the total annual replenishable ground resources of country, it is around 432 किलोमीटर क्यूब पर ईयर. तो कितना पानी हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. तो जो टोटल ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट है इंडिया का दैट इज अराउंड 432 किलोमीटर क्यूब पर ईयर. तो इसमें जो रेनफॉल से रिप्लेनिशमेंट होगा दैट विल बी अराउंड 342.43 किलोमीटर क्यूब, and from the canal irrigation system it will be 89.46 किलोमीटर क्यूब. तो आपको यहाँ पे याद करना है कि टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है 432, जो कि रेनफॉल के थ्रू कितना होएगा 342.43 किलोमीटर क्यूब, एंड फ्रॉम द कैनाल इरिगेशन इट इज 89.46 किलोमीटर क्यूब. तो now you see, if we look at the use of the groundwater out of 430 kilometer cube, then you can see for domestic, industrial and other processes 71 kilometer cube is used, and for irrigation it is 361 kilometer cube. So you can think of, for irrigation majority of the groundwater resources are being used. तो irrigation ज़्यादा आपका utilize करता है आपके ग्राउंड वाटर को एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. ओके, सो इट मीन्स एस्टिमेटेड यूटिलाइजेबल वाटर जो है, तो ग्राउंड वाटर का हमने पता कर लिया 432 किलोमीटर क्यूब, और अगर सरफेस वाटर की बात करें तो इट इज अराउंड 690 किलोमीटर क्यूब. तो टोटल यूटिलाइजेबल वाटर कम्स अराउंड 1122 किलोमीटर क्यूब. आई नो ये फिगर्स बहुत सारे हैं, बट लेट मी टेल यू बहुत ईजी हैं याद करने में अगर आप इन्हें एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे, और यू जस्ट राइट देम ऑन योर चार्ट पेपर्स, और चार्ट पेपर्स पे लिख सकते हैं, और जहाँ पर भी आप डेली पढ़ते हैं उसके सामने आप वॉल्स पे लगा सकते हैं, तो ताकि ये फिगर्स आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए. ओके, तो so this is all for the day. So this lecture, as I promised you, it's full of facts and figures जो कि आपको याद करने हैं. एंड लेट मी टेल यू, आपको एक या दो क्वेश्चन तो इससे मिल ही जाने हैं. तो अगर एक लेक्चर में आपको एक या दो क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा. ओके, सो इफ यू हैव लाइक द लेक्चर, डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर ओन YouTube channel Agri-Tutorial, and yes, do not forget to press the bell icon to get the regular updates. So this is all for the day, and stay healthy, stay with your family, and if you have any kind of query you can ask me anytime in the comment section. So thank you very much viewers and the class. Bye bye.